Chupaketenu Nepale kanchula kala Chupaketenu Dilevali vedecha Aketadeka Dilevali vedecha Aketadeka Tumo samrangi Aketadeka Savandeyalume Rima Jimalai Tumo samrangi Aketadeka Amarit Jaleacha Ambaracho Barase Amarit Jaleacha Ambaracho Barase Duikavari Rija Laga Ketadeka Duikavari Rija Laga Ketadeka Yuma Samrani Aketadeka Savandealune Prima Jimalai Tumo Samrangi Aketadeka Savannehi Nedi Mastichayake Savannehi Nedi Mastichayake Najarande Tira Chalake Tadeka Najarande Tira Chalaketadeka Tumo samrangi Aketadeka Savandealune Prima Jimalai Tumo samrangi Aketadeka Dama bina ajayaba ho gaya tera Dama bina ajayaba ho gaya tera Duikavari menu ajama ketadeka Duikavari menu Ajamaketadeka Tumo samrangi Aketadeka Savandealune Rima Jimalai Tumo samrangi Aketadeka Page 115. Guru Sona Mera Kirtapalani Sayo Dina Dayalani Sayo Satguru Sona Mera Kirtapalani Sayo Dina Dayalani Sayo Kai Janamato Vichari Sime
Lapadi Paritam Pyara Satguru Pura Nilvajay Menu Ho Jai Paro Tara Hari Janamato Vichari Sine Lapadi Paritam Pyara Satguru Pura Nilvajay Menu Ho Jai Paro Tara Nimilagi Yamagi Mera Dashaki Mera Nimilagi Yamagi Mera Ishena Shaki Mera Kare Sambalani Seyo Dina Dayalani Seyo Satguru Sona Mera He Kirpalani Seyo Dina Dayalani Seyo Seyo Nime Karadara Pirake Dari Pagalahomi Tilada Joni Koi Namilia Nasuni Arjoi Seoni Me Karadara Pirake Dari Pagalahomi Tilda Jani Koi Namilia Nasuni Arjoi Nimilagi Apyara Mera Nidili Sahara Mera Nidili Apyara Mera Nidili Sahara Mera Shakara Bandarani Seyo Dina Dayalani Seyo Satguru Sona Mera Kirpalani Seyo Dina Dayalani Seyo Jaladare Ordune Tapake Tata Tiratanaya Shivan Malete Mandira Puje Kisena Dukkha Vandaya Jaladare Ordune Tapake Tata Tiratanaya Shivalavate Mandir Puje Kise Dukkha Vandaya Nivera Mahi Maya Nimenu Rasate Maya Nimera Mahi Maya Nimenu Rasate Maya Tave Vidarani Seyo Dina Dayalani Seyo Satguru Sona Mera He Kirpalani Seyo Dina Dayalani Seyo Sona Darshani Kako Sabanu Sunakirna Palapiyare Eva Pari Ajaiva Jijindari Lavo Harakinare Sona Darshani Kako Sabanu Sunakirna Palapiyare Eva Bari Ajay Badi Jindari Lavo Harakinare Nisacha Santa Aya Nimera Santa Aya Nisacha Santa Aya Nimera Santa Aya say that say that God Almighty, He is like the ocean,
समुद्र भी पानी ही है। तो कहते हैं इस तरह से जब तक हम इस शरीर में मौजूद हैं, हम बूंद के समान हैं, क्योंकि मन के दायरे में कर्म करके जीव मलिन हो गया और इसका प्रकाश का लोप हो गया। So he is the ocean, and the saints are the waves, and the soul, the jiva, is like the drop. The soul is like a drop because it is encased in this body, and along with the mind, it has done uh, deeds, it has done karmas, and it is now laden with the filth of those karmas. तो जब हम साधन कर हमारी तीसरी आंख खुलती है तो उससे हमें अपनी आत्मा नजर आती है। आत्मा एक बिंदु के समान है, लेकिन शब्द और प्रकाश रूप है। When we cross the 9 doors and our body becomes numb and we come to the 10th door, there we witness the soul ourselves. We see the soul for ourselves, and we see in a round shape, and it is only light and sound. जब हम अपने आप को अंदर देख लेते हैं, हमें भरोसा हो जाता है कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं। When we see for ourselves our soul, we realize that we are not the body and soul. और जब गुरु की कृपा से हमारी रूह सिमट के पार ब्रह्म बाहर आने लगता है, When, with the grace of the master, the soul goes to Par Brahm and takes a dip in the whole in the it at the Par Brahm, it sheds the three coverings that it is encased in, and it starts. It gets the luminance of 12 suns there. गुरु भी शब्द और प्रकाश रूप है। हमारी आत्मा भी शब्द और प्रकाश रूप हो जाती है। वहां स्त्री पुरुष का भेद खत्म हो जाता है। There, the master is in the form of light and sound, and the soul also becomes the this difference between male and female, and all the coverings, all of that goes away. क्योंकि सब आत्मा का एक ही रूप है। न आत्मा स्त्री है, न पुरुष है। वो परमात्मा का बेटा है। वो सतलोक सचखंड से आया हुआ समुद्र की बूंदें हैं। सब एक ही समान है, लेकिन यहाँ अपने कर्मों के भुगतान के लिए वही आत्मा एक जगह स्त्री और एक जगह पुरुष बनी बैठी है। All the souls are of the same form. They are all drops of the ocean of God Almighty, and they are all similar. Only when they come here, they take the form of a male or a female to redeem their deeds. But otherwise, they are not male or female. They are all the sons of God Almighty. तो दोनों गुरु भी शब्द रूप, आत्मा भी शब्द रूप, दोनों मिल करके करते हैं। जब सतलोक में जाते हैं, सतपुरुष का दर्शन करके दोनों शिष्य में भी 16 सूर्य का प्रकाश आने मौजूद हो जा माने निकलने लगता है। So after Parbrahm, when with the grace of the master, the soul goes back. Both the master and the soul, they go and get the darshan of God Almighty, of Satpurush. The soul also, which is now has the luminance of 12 suns, after the darshan of God Almighty, it also has the luminance of 16 suns, like that of the master. तो गुरु शिष्य समान हो जाते हैं। इसीलिए कबीर साहब धारा किया है कि गुरु कर ले पारस तो लोहा कंचन करे, लेकिन गुरु कर ले आप समान। पारस तो लोहे को सोना बना देता है, लेकिन पारस नहीं बनाता। लेकिन गुरु अपने सिक्क को अपने जैसा ही बना लेता है। So there the soul becomes like the master. And the masters in their Bani say that the philosopher's stone has this quality of converting iron into gold, but it cannot convert iron into a philosopher's stone. So the masters are like that philosopher's stone which can convert the disciple into themselves. So the soul becomes exactly like the master after it gets. अलग होती हैं, परमात्मा अलग होता है, आत्माएं अलग अलग होती हैं, लेकिन सब आत्मा
में 16 सूर्य का प्रकाश बाहर आते रहता है, सब हंस कहलाते हैं। Satpurush is different, and all the souls, they have a different identity, but all are similar and called swans. तो इसीलिए कहते हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश है, ये ना स्त्री है, ना पुरुष है, न कोई और शरीर है। ये कर्मों के भुगतान के लिए 84 के जेल खाने में भटक रही। So the soul is essence of God Almighty. It is a drop of God Almighty, and only to pay for the deeds, it is going back again and again in the cycle of the 8.4 million life forms. जब इन्हें कामिल मुर्शिद पूरा गुरु मिल जाता है तो इन तीन खोल से अलग होकर के आत्मा अपने पिता परमात्मा की गोद में पहुंच जाती है और हमेशा के लिए सुहागिन हो जाती है। So once the soul meets the master, then it is able to get rid of the three coverings, and then it is able to go back to God Almighty and in the lap of God Almighty. इसीलिए दुनियावी लोग वैकुंठ कैलाश को ही मुक्ति का धाम समझते हैं, लेकिन वो मुक्ति का धाम नहीं है, वो भुक्ति का ही धाम। वहां भी शरीर है, हम यहाँ स्थूल शरीर में है, वहां सूक्ष्म शरीर में होते हैं, इतना ही फर्क है। लेकिन जहां तक शरीर है वहां तक मुक्ति नहीं। People misunderstand that liberation or salvation is we get salvation when we go to Vaikunt or Kailash or the heaven, but that is not so body here. We get a causal body there, and so long as there is a body, there is no salvation. तो इसीलिए कहते हैं केवल संतों के समागम से ही जीव मुक्त हो सकता है। परमात्मा ये बढ़त बनाई है, जब तक कि संत नहीं मिलते ये 84 के पार नहीं जा सकता। So it is only with the grace of the master that the soul is able to get out of this cycle of life and death. It is ordained by God Almighty and decided by Him that only saints will be able to get the salvation of the souls from these worlds. तो हमें चाहिए, हमें अपनी आत्मा पे दया करनी चाहिए, रोज रोज भजन सुमरन करके इसे इस काल के जाल से मुक्त करने की कोशिश करना चाहिए। So we should also make our efforts to get ourselves free from this cage of Kal. क्योंकि इस दुनिया में कोई भी सुखी नहीं है, चाहे वो राजा हो या भिखारी। Because everyone is filled with sorrow, whether he is a king or he is a pauper, everyone is filled with sorrow. तो महात्मा कहते हैं कि सुखी संत को दास, जो संतों के दास हो गए, जिन्होंने गुरु का हुक्म माना, नाम को अपना जीवन आधार बनाया, वो सुखी है। Fundamentals for their life, only they are the happy ones. They have got, all the others are filled with sorrow. तो हमें चाहिए हम संतों के बातों को माने, उस पर भरोसा करें, रोजाना 2.5-3 घंटे की बैठक बना के अंदर आवें और अपने आत्मा को इस काल जाल से मुक्त करें। So we should therefore sit for meditation for 2.5 hours every day and help this soul to get out of this cage of Kal. कहते हैं कि टाइम बहुत अच्छा है, हम सो के उठे होते हैं, हमारा मन शांत होता है, शांत मन ही भजन के लायक होता है, हमें इससे फायदा उठाना चाहिए। हम आंख बंद करके सुमरन और ध्यान से जुड़े। The time is good and we should make the most of it. It is quiet, and a quiet mind is good for meditation. So let us make the most of this time and close our eyes and get connected to Simran and Dhyan.